Sir. Hello everyone, how are you all? I am fine, sir. What about you? But I am also fine. I welcome you all in today's session. In this session, we are going to study math subject. And today we are going to study about the triangle. But before moving ahead, I would like to confirm that whether you all have solved all the questions of exercise 5.2 or not. Take math book. Yes, Mehak, did you solve the exercise 5.2 or not? Yes, sir. Priya, what about you, Vida? Yes, sir. So solve. Is there any problem with any questions? Do you have book or not? Right now, do you have book? No, sir. Sir, Okay. the Do book one is thing. there. Take out your book. Take out your book. Just I can wait for a minute. You all can arrange your Yes. book. Take out your books from your bag. Okay. I hope that everybody have arranged the book. Mehak is asking. Mehak is having some of the issue with her K4 question from the exercise 5.2. So 5.2 से जो आपका problem है बेटा K4. Can you read the question? Mehak, Yes, sir. can you read? Both the hour and the minute hands of a clock are at 3. What would you call the angle which is formed when one of the hand of the clock is rotated clockwise by 3 right angles while the other hand remains at 3? Okay. Okay, let me draw one thing to show you all this thing. Maybe it would be better. इसी तरीके से तो शायद घड़ी कोई रहती है. Yes, sir. नहीं. Okay. Let me draw one thing. How many hands there are? How many hands in the clock? Can anybody tell us? There are many. Let's say second hand is there, minute hand is there, hour hand is there. I hope everybody is familiar with this one. ना घड़ी देखना आता है कि नहीं? सर आता है. हाँ. सर आता है. चलिए ठीक है. So as per your question, both the hour and minute hands, of a clock are at 3. वो कहाँ पे हैं? Yes, sir. कहाँ पे हैं? 3 पे हैं. Let's say कि 3 page. I have drawn hour hand. Do one thing. Let me draw another line. Okay, this end will be better. Let's say this is an hour hand, and now I'm going to draw minute hand in yellow color. Okay. Yes, sir. Okay, it is not moving ahead. I have to draw one more line like this. Okay, there is one more hand, that is a minute hand. It is in yellow color. It's not visible properly. Then what I'm doing, I'm converting the color of this. I'm changing the color of this hand. I hope green color is visible. Green color is Yes, more sir. visible than yellow. So as of now, what we are getting, there is a minute hand and hour hand is on the 3 o'clock. Is on the 3 as per a question. जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है उसको हमने यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश किया. Both the hour hand and minute hands of a clock are at 3. 3 पे ही है ना?
Yes, sir. What would you call the angle? What would you call the angle? आप उस एंगल को क्या Sir, कहेंगे? complete angle. Sir, complete angle. बेटा let me complete the question. What I'm going to ask. It's not a complete angle. इसके बीच में जीरो एंगल बन रहा है. अगर पूरा एंगल देखेंगे तो it's a complete angle. Maybe let me ask the question, then you have to tell that which angle is this. I'm telling that both the hour hand and the minute hands of a clock are at 3. जैसा पहले पूरा क्वेश्चन से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे उस हिसाब से सारी चीजें करेंगे. Then I will ask the question. Then after then I will ask the question. Then you need to reply. As per the question, both the hour and minute hands of a clock are at 3. I think everybody is getting minute hands and hour Yes, hands sir. both are at 3. What do you call the angle? What would you call the angle? आप उस एंगल को क्या कहेंगे? Which is formed when one of the hands of the clock is rotated clockwise by 3 right angles while the other hand remain at 3. ये लंबा सेंटेंस है, इसका आपको मतलब निकालना पड़ेगा. Then only you will able to solve this kind of the question. सेंटेंस को समझने की कोशिश करना है बेटा. Which is formed मतलब जो कि बनता है. कैसे बनता है? When one of the hands of the clock, जो आपका 2 hands is there ना, one of the hands of the clock क्या होगा? अंश पांडे कौन खेल रहा है आपके बगल में? आपका ध्यान कहीं और है. मैं आपको बाहर कर दूंगा क्लास से. पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई किया करिए. अगल बगल में कोई अगर बातें करना हो तो पहले उन लोगों से बातें कर लीजिए, फिर आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा. बेटा क्वेश्चन पढ़ते हैं. When one of the hands of the clock is rotated मतलब समझ में आ रहा है? Yes, sir. घुमाना. घुमाया जा रहा है, रोटेट किया जा रहा है. राउंड शेप में जा रहा है तो दैट इज द रोटेट ही किया जाएगा. One of the hands of the clock is rotated. One of the hands of the clock is rotated. इसका मतलब क्या हुआ? इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? One of the hands of clock का एक हैंड. कौन सा हैंड? या तो मिनट हैंड या तो आवर हैंड, कोई भी हैंड ले लीजिए. इसका मतलब यही तो हुआ. वन ऑफ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक का एक हैंड, चाहे मिनट वाला मिनट हैंड ले लीजिए, चाहे क्लॉक हैंड, चाहे आवर हैंड ले लीजिए. उसको क्या किया जा रहा है? रोटेट किया जा रहा है. कैसे रोटेट किया जा रहा है? क्लॉकवाइज बाय 3 राइट एंगल. क्लॉकवाइज बाय 3 राइट एंगल. Right angle. राइट एंगल में समझ में आ रहा है क्या होता है? राइट एंगल में क्या हुआ? Yes, sir. The 90 degree. 90 डिग्री. तो डू वन थिंग. मैं मिनट हैंड्स को पकड़ू, किसको पकड़ू? मिनट. लेट मी ड्रॉ दिस वन. अभी मैं क्या करता हूं? आई विल ट्राई टू नो. एक्चुअली इट इज नॉट हैपनिंग. इट इज नॉट गेटिंग रोटेटेड. यस, वन ऑफ द हैंड्स. मैं मिनट हैंड्स को यहां से पकड़ रहा हूं, इसको रोटेट कर रहा हूं. और जानते हैं कितना? 3 राइट एंगल मीन्स लेट्स से कि इसको हमने यहाँ पे एक राइट एंगल किया तो 1 राइट एंगल 90 डिग्री, यही तो होगा इसका. Yes, sir. Yes, sir. ये 2 राइट एंगल हो गया. Yes, Yes, sir. sir. एंड ये 3 राइट एंगल हो गया ना. Yes, sir. Yes, sir. As per the question that we have followed, what we have done? We have rotated one of the hands of this clock by 3 right angle. 3 right angle के बराबर यहां से रोटेट करके 3 right angle के बराबर रोटेट कर दिया. अब उसके बाद क्या करना है? While the other hand remains at 3. जो अदर हैंड्स है यानी मिनट हैंड्स को आपने रोटेट किया, अदर हैंड्स 3 पे ही रहने दीजिए. तो इसके बीच में जो बना हुआ एंगल है, इनके बीच में जो ये एंगल बना हुआ है, which type of angle is this? Which type of angle is this between these both the hands? Reflex angle. Reflex angle. Reflex angle. So what is the answer of this question is?
Reflex angle. Reflex angle. Reflex angle is the answer. You all need to draw the clock in this way, and also you have to tell the answer. Okay. Yes, Read the sir. question number 5. Read the question number K5, and let me confirm that whether you all are able to understand the question or not. Read the question number 5. Ansh Pandey. Both the hour and the minute hand of a clock are at 12. What would you call the angle which is formed when one of the hands of the clock rotated anti-clockwise by two right angle while the other hand remains at 12? बेटा आप 6 में पढ़ रहे हैं, फिर भी 2 गलतियां आपने किया है. WHILE वाइल होता है, will नहीं. ओके, दिस इज वाइल. वन मोर थिंग, FORMED फॉर्मेड आपने बोला ना, इट्स अ फॉर्म्ड. व्हाट इज दिस? Formed. फॉर्म्ड. फार्म जैसे आप बोलते हैं ना, फार्म नहीं बोलते हैं. Yes, sir. गांव में लोग फार्म बोल देते हैं, वो फॉर्म होता है. नहीं, फॉर्मेट आप बोलने लगे. ओके, it's a formed, and the WHIL is a while. What is happening here? Let me erase the things. Here there is a 2 hands of the clock. Let me draw one. Let's say this is a minute. Let's say this is a hour hand. Hour hand थोड़ा छोटा होता है, मैंने hour hand छोटा भी बना दिया. अभी कलर चेंज करता हूँ. Let me take another color. Let's say blue color. देखो ब्लू कलर है, थोड़ा सा बड़ा मैंने बनाया है. दिस इज ए मिनट हैंड. व्हाट यू हैव टू डू? बोथ द आवर एंड मिनट हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर एट 12. अभी 12 पे है या नहीं? Yes, sir. व्हाट डू यू कॉल द एंगल? आप उस एंगल को क्या कहेंगे? व्हिच इज फॉर्म्ड, जो कि बनता है. कब बनता है? व्हेन वन ऑफ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इज रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज बाय 2 राइट एंगल. बेटा एंटी क्लॉकवाइज बाय 2 राइट एंगल. एक वन ऑफ द Straight angle. वन ऑफ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक. आप मिनट हैंड को पकड़े या फिर आवर हैंड्स को करें, उसको क्या करना है? 2 राइट एंगल के बराबर उसको रोटेट कर देना, वो भी एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है? उल्टा घुमाना. उल्टा घुमाना. चलो उल्टा घुमाना. इसको पकड़ा यहाँ पे, उल्टा ऐसे तो घूमता है. ये आपका 90 Yes, डिग्री हो sir. गया. Yes, sir. हो गया. आपका क्या, हाउ मेनी? So straight angle. 2 राइट एंगल. 2 राइट एंगल इज दिस. 2 राइट एंगल ऐसे तो होगा, मिनट हैंड्स एंड आवर हैंड्स. तो Yes, sir. तो व्हाट, Yes, sir. which angle is this between these both the hands? Straight इसके angle. बीच में बनाओ, which angle is this? Straight angle. Straight angle. Straight angle. Sir, straight angle. Straight angle is the right answer for this question. Is there any other confusion with any question from the exercise 5.2? If you are having any issue with any question, let me know. I will explain. Otherwise, I will be moving ahead on the next topic, that is a triangle. Sir, Beta, all the questions I think you all have done. Okay, Mehak, is there any more concern? Yes, with sir. any question, beta? No, sir. All right. So, beta, moving ahead on the triangle, that is another topic. So, for this topic, I have to share the book, because before moving ahead, first of all, it is necessary that we should be knowing the theory, we should be knowing the concepts, that what and how we are have to tell. I think triangle is not a new for you all. Already you have studied about the triangle in the previous classes. Did you study about the triangle or not? Yes, sir. yes, sir. How many sides are there, Ansh Pandey? Yes, sir. Ansh Pandey, how many sides are there Yes, in the sir. triangle? 3. 3. How many vertices is there, Priya? 3. Priya, how many vertices is Sir, there? 3. Priya? Sir, 3. 3 vertices is there. Aviral, can you tell us that what is vertex? What is vertex? Side of triangle is called vertex. What you're telling, beta? Side of
triangle is called vertex. That means कि you were telling that कि let's say कि if I draw a triangle, let's say let me draw the triangle. Okay, 1, 2 and 3. 3 sides are there. As per you, the side of the triangle, ये जो side है ये आपका vertex है. क्यों अबिरल? ये आपका vertex है? Is it vertex? महक, No, sir. Yes, sir. you tell us बेटा, what is vertex? A point when it is formed two arms, then it is made in vertex, Okay, actually you tried. which is made of You tried बेटा, you tried बेटा. vertex क्या होता है? Whenever two sides are joining, whenever any two sides, whenever end of whenever wherever not whenever wherever two end of the two sides are meeting, there on that point, on the meeting point, a vertex formed. Let's say कि अभी ये आपका साइड है, ये आपका साइड है, ये दोनों यहाँ पे इस पॉइंट पे फॉर्म हो रहे हैं, मिल रहे हैं, तो ये वर्टेक्स कहलाएगा. और वर्टेक्स पे हमेशा एंगल फॉर्म होता है. एंगल कहाँ पे फॉर्म होता है? वर्टेक्स पे ही. ओके, तो हाउ मेनी वर्टेक्स इज देयर? यहाँ पे एक एंगल बनेगा, यहाँ पे एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी एंगल बन रहा है, दो साइड्स यहाँ पे भी मिल रहे हैं. टू साइड्स इज आल्सो मीटिंग हियर, टू साइड्स आल्सो मीटिंग हियर. So that means that these are the vertex of the triangle. Okay. Yes, sir. So I think I'm not supposed to tell about the triangle. You all are knowing about the triangle. Today we are going to study that key. Today we are going to classify the triangle based on the length of their side. एक तरीके से कह सकते हैं types of triangle you can say. There are many triangles. You may have a triangle. Acha, how many sides are there? You told that कि 3 sides are there. There may be all the 3 sides are equal. Maybe in a triangle all the 3 sides are equal. ऐसा कभी हो सकता है कि तीन के तीनों sides equal हो. ऐसा possible है या नहीं? Yes, sir. Sir, yes, sir. It is possible? सेम लेंथ के 3 लाइन सेगमेंट में बनेंगे, आपस में 3 लाइन सेगमेंट बनकर के ट्रायंगल बना देंगे. अच्छा, वन मोर थिंग यू हैव टू टेल अस, इज इट पॉसिबल टू फॉर्म अ ट्रायंगल लेस देन 3 लाइन सेगमेंट या लाइन? इज इट पॉसिबल? no, to sir. form a triangle less than No, sir. less than 3 lines? 3 लाइन से कम से क्या ट्रायंगल बन सकते हैं? No, sir. No. No, sir. At least three line segment you should be having. More than 3 lines से भी क्या ट्रायंगल बन सकते हैं अगर 3 लाइन से ज्यादा है? No, sir. No, sir. No, more than No, sir. 3. The triangle is a type of polygon or having 3 line segments. Closed figure having 3 line segment is called the triangle. If there is more than 3 line segment, let's say if any closed figure having the 4 line segment, that will be known as a क्या कहलाएगा? Polygon. पॉलीगॉन तो है ही बेटा. अब पॉलीगॉन में से एक क्लोज फिगर, अ पॉलीगॉन हैविंग 4 साइड्स. व्हाट टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन इज दिस? 4 साइड्स वाले पॉलीगॉन को क्या कहते हैं? पेज रखना बंद करो, ऐसे बताओ. Quadrilateral. क्वाड्रिलेटरल. यस. अगर 4 के चारों साइड्स इक्वल रहेंगे तो वो क्या कहलाएगा? स्क्वायर. इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दैट विल बी द रेक्टेंगल. उधर Right angle. जब क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे after the triangle, then we would be discussing all those things. In the same way, in the triangle, if all the sides are equal in terms of length, if all the sides are equal of a triangle, then this kind of the triangle is known as a Polygon. equilateral triangle. Let me confirm one Yes, more sir. thing. In figure 15,
there is a triangle where all the sides of this triangle is equal. In the figure 16, only two sides are equal. Only two sides are equal. वो दो साइड कोई जरूरी नहीं कि ये आप जो ऊपर है वर्टिकल है वही इक्वल हो. Any of the two sides are equal. आपका ये और ये नीचे वाला भी इक्वल हो सकता है. ओके, Yes, sir. लेट्स से कि मैंने ये Yes, बनाया sir. 5 सेंटीमीटर का और ये भी 5 सेंटीमीटर का बना दिया. तो जो ये लेंथ होगा ये तो अलग हो गया ना, 5 से ज्यादा हो जाएगा. और ये आपका Yes, मोर देन sir. 5 Yes, है. sir. तो इट इज ऑल्सो द, यहाँ पे भी आपका टू साइड्स आर इक्वल, इसमें भी टू साइड्स. और जो अभी मैंने ड्रॉ किया, here also the only two sides are equal. And whatever the figure in the figure 16, only two sides are equal in here also. You may also see the triangle where none of the sides are equal. That means all the sides are different in the size, in the length. ये अगर 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ऐसा पॉसिबल है कि तीनों साइड आपका अलग अलग मेजरमेंट के हों. तो इस तरह के ट्रायंगल को क्या Yes, बोलते हैं? sir. इसी तीन तरह के ट्रायंगल्स आप फेस करेंगे. If you are having a triangle where all the sides are equal, that kind of the triangle is known as a equilateral triangle. A triangle with equal sides and equal angle. अगर बेटा इक्वल साइड जो साइड से इक्वल है तो इक्वल एंगल होगा. ओके, अ ट्रायंगल विथ इक्वल Yes, sir. साइड्स is called an equilateral triangle. And a triangle in which there is only two sides are equal, अगर सिर्फ दो sides equal हैं तो that type of the triangle is known as a isosceles triangle. क्या कहलाएंगे? Isosceles triangle. Triangle. Isosceles. Isosceles. एक बार बोलने की कोशिश करिए. Yes. Isosceles. 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 Okay. The triangle where none of the sides are equal, जिसमें तीनों sides आपका different हो, that type of the triangle is known as a scalene triangle. Isosceles. बेटा Scalene. जहाँ पे कोई भी आपके sides equal नहीं होंगे, सारे equal आपके अलग अलग हैं, तो वो scalene triangle कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं? Scalene triangle. Scalene triangle. तो ये सारी चीजें इसके पहले भी आपको पढ़ाया गया था कभी क्लास 5 में, तो शायद पढ़े ही होंगे ना, कि नहीं पढ़ाया गया था? No, sir. इट इज न्यू फॉर यू ऑल. sir. ठीक है, ये तो नहीं बहुत अच्छी पढ़ाया. बात है. इट इज मतलब ये तो फिर बहुत ही अच्छी बात है. एटलीस्ट टुडे यू हैव गॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट. कुछ नई चीजें आज आपने सीखा, पुरानी चीजें नहीं है, कुछ आपको और जानकारी हो गई. Yes. लोगों को ट्रायंगल पता है. ऑल्सो यू कैन टेल द टाइप्स ऑफ द, ऑल्सो यू कैन क्लासिफाई द टाइप्स ऑफ द ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेंथ. लेंथ के हिसाब से अगर सारे लेंथ, अगर जितने भी अगर ट्रायंगल के और जितने साइड्स हैं सारे इक्वल हो तो वो कौन से ट्रायंगल कहलाएंगे? द ट्रायंगल हैविंग ऑल द साइड्स आर इक्वल. Equilateral triangle. Equilateral triangle. Very good. The triangle where none of the sides are equal, कोई भी साइड्स इक्वल नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? Scalar. Scalene triangle. A triangle where only two sides are equal, that triangle is known as a Isosceles. isosceles. Isosceles triangle. Isosceles. इसको 2 बार 4 बार इसको प्रैक्टिस करिएगा, इसी पे पूरा बेस क्वेश्चन है. Only these three types of the triangle is there on the basis of the length. If we classify triangle on the basis of the angle, if we classify triangles based on their angle, then again you will be finding these three types of the angles. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. Okay beta, I hope you are, Yes, sir. now am I audible to you all? Mehak, am I audible beta? Priya, Hans Pandey?
Priya. Beta, if we classify triangle based on the measurement of their angle, if we classify triangle on the basis of their angle, then also there are the three types of triangle. You may have a triangle where all the three angles are equal in the measurement. You may have a triangle where all the three angles are equal in measurement. यहाँ पे तीनों के तीनों angles बराबर हों. अच्छा, that type of the angles, that type of the triangle is known as a acute angle triangle. ये तीन के तीनों एंगल जब होंगे, देन यू वुड बी फाइंडिंग, कभी आप देखेंगे मेजर करेंगे तो जो ये बीच में एक एंगल होगा ये लेस देन 90 होगा. लेस देन 90 दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. What about it? What about it, beta? A triangle in which all the angles are less than 90. आपको ऐसा ट्रायंगल जिसमें सारे एंगल लेस देन 90 हो, ये भी 90 डिग्री से कम हो, ये भी 90 डिग्री से कम हो, ये भी 90 डिग्री से कम हो, तो दिस काइंड ऑफ द ट्रायंगल इज नोन एज अ एक्यूट एंगल ट्रायंगल. क्या कहलाते हैं? एक्यूट एंगल triangle. But if you have a triangle where one of the angle is a 90 degree, one of the angle is a right angle, so that type of triangle is known as a right angled triangle. Acute angled, right angled, जो एंगल बने उसे एंगल के नाम से ही ट्रायंगल बना दिया गया. one of the angle is 90 degree, तो क्या कहलाएगा? right angle triangle. Right angle triangle. Right angle triangle. Let's say if you are having a triangle just like figure 20, where one of the angle is more than 90 degree, if one of the angle is more than 90 degree, then that type of triangle is known as a obtuse angle triangle. अब ये एंगल के नाम एज पर द मेजरमेंट ये हमने आपको ऑलरेडी बता दिया था ना. Yes, sir. So I hope on the basis of angle, can you classify the triangle on the based on the measurement of their angles? Tell me one thing. There is a question. Can two of the angles of a triangle be right angles or obtuse angle? Can two of the angles, क्या दो angles of a triangle, क्या दो एंगल ऑफ अ ट्रायंगल बी राइट एंगल्स और ऑब्ट्यूस एंगल? क्या किसी ट्रायंगल के दो एंगल ऑब्ट्यूस एंगल या राइट एंगल हो सकते हैं? यस या नो? थिंक. Anybody having any idea or not? Sir, no. No. Yes, sir. Actually, no. What you can do? You can do an activity at your home. What you can do? You can draw a triangle and measure all the angles. Then what you can do? Then you can cut all the angles. In the same way as done in the explanation of this figure. इसी तरह आप लोग घर पे भी कर सकते हैं. In the same way also you can do this activity at your home. What is the activity? Let us read about the Sushant's teacher draws a triangle on a sheet of a paper as shown below. अब सुशांत के टीचर के बजाय आप ये सोच लीजिए आपके टीचर यानी मैंने इसको ड्रॉ किया है इस तरह का ट्रायंगल. अब what is next? Then she tears the paper in pieces such that each pieces has an angle. अभी काम करो, दीपिका या महक एक मेरी तरह इसी तरह बना लेना कोई भी, आप इसको आप टीयर यानी फाड़ देना, फाड़ के फेंक नहीं देना है. You need to tear the paper in pieces such that each pieces has an angle. इसको आपको इस तरीके से फाड़ना है कि हर पीसेस जो आपका पेपर जो आपकी एंगल है ये पूरा प्रॉपर्ली निकल जाए. आप 3 निकाल दीजिए, 2 निकाल दीजिए, 1 निकाल दीजिए. Then she pastes all the pieces on a chart paper. आप किसी चार्ट पेपर पे क्या है, आप किसी कॉपी पे ही रख करके देखिएगा. Then you would be getting that
the three angles of triangle when put together form a straight angle. जब तीनों एंगल आप ऐसे आप रखेंगे, एक इधर फाड़ लेंगे, इधर फाड़ लेंगे, नहीं होगा तो कैंची से काट लेना, सिजर से, और फिर देखना आप तीनों एंगल में लाएंगे, then you would be getting a straight angle. और straight angle आपको पता है sum of straight angle कितना, straight angle कौन से एंगल कहलाते हैं? 180 डिग्री। 180 That डिग्री। means कि तीनों डिग्री, ये तीनों एंगल मिल करके जब स्ट्रेट एंगल फॉर्म करते हैं तो यानी 180 डिग्री फॉर्म करते हैं. दैट मींस द सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स, सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री. और इसीलिए हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा, सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स, सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाउ मच? 180 180 डिग्री।